हाँ ठीक है. You guys need to play games. Fine. I'll finish it quickly. It's a small topic. Uh, so basically, I mean, no one will ask you regarding headache. If there's like junior guys, UG में ऐसे पूछते नहीं है. This is just a fun little topic, for your own knowledge, because you will have relatives, neighbors coming to you with headache ka complaint. They'll often ask you about it, and then you find yourself clueless regarding what to say. This has happened to me also बहुत सारे times. Literally zero knowledge regarding how to approach headache as such. But there's a fun set of questions that you can ask. ठीक है? One of your first responsibilities is to basically eliminate dangerous varieties of headaches, ठीक है? Which require urgent admission to the hospital. ठीक है? So that's one thing that I learned through my professors and residents, medicine वाले, कि it's not your responsibility to diagnose headache as UGs, ठीक है? Diagnosing headache तो MD medicine वालों का काम है and DM neuro वालों का. It's not our responsibility, but what our responsibility is that we should be able to recognize the dangerous varieties of headache, ठीक है? And like urgent referral देना चाहिए हमको to a higher center over time, ठीक है? So yeah, I'll basically in this discussion I'll basically tell you guys how to identify dangerous varieties of headache, ठीक है? And refer them to a higher center for further investigation. Basically red flags headaches के, ठीक है? No. Guys, is the audio quality good क्या? Am I being too loud or is it crackling or anything before I start? It's good? Okay. Fine. चलो, so with this I'll start headache का topic. I'll go in my usual format, वो Socrates वाला, site, onset, character, radiation, associated features, all that, ठीक है? चलो, so with this we'll start. सबसे पहले site, let us discuss site of headache. So there's this relative that comes to you, ठीक है? This annoying auntie, and she's like, मेरे को headache हो रहा है, ठीक है? What is the first question you ask? The first question is always site, ठीक है? So regarding the site of headache, you get some important clues. क्या हो सकता है, ठीक है? If it is unilateral, ठीक है? If it is only occurring on one side, right मतलब right, she specifically points right side, left side, ठीक है? Either right or left, ठीक है? Migraine is characteristically unilateral, लिख दो, ठीक है? This stands out quite prominently. वो specifically बोलता है मुझे right side या left side पे pain, ठीक है? That's migraine. What if the patient tells you उनको headache है all along the forehead, frontally, bilateral, as well as on the back of the head, occiput में, ठीक है? So पूरा forehead, bilaterally on the frontal side, or optional plus minus on the occiput, ठीक है? When you see this pattern, recognize it as a tension type headache, ठीक है? ये मेडिकल स्टूडेंट्स को होता है टेंशन टाइप हेडेक, ठीक है? टेंशन नाम में ही है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन फर्दर, ऑलराइट? So tension type headache, all right? So bilateral frontal plus minus occiput, ठीक है? This is tension type headache, ठीक है? And what about headache which is localized behind the eye, ठीक है? Patient will tell you कि आँख के पीछे दर्द हो रहा है मुझे specifically, ठीक है? I'm having pain behind the eyes. Yes, it's cluster headache. Yeah, it's cluster type of headache. The patient will specifically tell you कि आँख के पीछे हो रहा है, ठीक है? अब इसमें यूनिलैटरल बायलैटरल आई वोंट गो इनटू डिटेल बिकॉज इट्स वेरी ऐसे आई फाउंड कन्फ्लिक्टिंग info on various different sources. So just say कि localized behind the eye, that is cluster type headache, ठीक है? All right. चलो, we are done with site. Let us move on to O, ठीक है? We'll move on to onset. All right. We'll move on to onset. ठीक है? See, now when I am coming to onset वाला heading, ऐसे कुछ specific information नहीं है. Any type of headache can be sudden or it can be gradual, ठीक है? What is one very special point, ठीक है? Extremely sudden headache, ठीक है? उसको thunderclap headache बोलते हैं, ठीक है? Extremely headache मतलब I'm talking about developing in 1 or 2 seconds, ठीक है? Patient will like I was chilling 5 seconds back and then 2 seconds later I'm having the worst time of my life. इतना quickly headache develop हो, ठीक है? Subarachnoid hemorrhage, very characteristic, ठीक है? Very characteristic. Subarachnoid hemorrhage.
ठीक है. And I've actually seen this patients. If you read theory books, वहाँ लिखा रहेगा. The patient will often mention that it has been the worst headache of their lives. ठीक है, it's that bad. ठीक है. And I thought ऐसे cliche statement है, but नहीं. I've seen मेरे medicine OPDs में I've seen two characteristic cases come, and they actually told कि इतना गंदा headache था, they felt like killing themselves. ठीक है, not a joke. The headache is that bad. And another patient actually said कि इतना इतना बुरा headache हुआ ही नहीं सर कभी. मतलब एकदम अचानक से आ गया, इतना दर्द हुआ, दे जस्ट फॉल डाउन समटाइम, इट्स दैट बैड. ठीक है. सो बॉक्स में लिख दो वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ और व्हाटएवर इन योर ओन फ्रेजेस. ठीक है. एंड इट डेवलप्स एक्सट्रीमली सडनली. ठीक है. यू स्पेसिफिकली आस्क द पेशेंट भाई 5 सेकंड 10 सेकंड. ठीक है, बिकॉज इट्स क्वाइट अ शॉर्ट स्पैन. बिकॉज इफ यू आस्क फॉर अ पेशेंट हेडेक कितना जल्दी डेवलप होगा, इफ दे से काफी जल्दी हुआ ओवर हाफ अ डे 1 डे, इट कैनॉट बी सब अरेक्नॉइड हेमरेज की वजह से. ठीक है. सब अरेक्नॉइड हेमरेज इज लाइक विद इन मिनट्स, नॉट इवन मिनट्स, ज्यादा बोल दिया मैंने, डेवलप्स विद इन सेकंड. ठीक है. ऑलराइट. सो दैट इज नॉट अबाउट आंसर्ड. ड्यूरेशन का मैं टाइमिंग के हेडिंग में बताऊंगा, सोक्रेटिस वाला टीम है. एंड देयर इज नथिंग अबाउट प्रोग्रेस हेडिंग का. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द इटियोलॉजी, सो आई वोंट डेल्व इनटू इट इंडिविजुअली, दैट इज थोड़ा कॉमन सेंस. ठीक है. सो वी आर डन विद एस, वी आर डन विद ओ. ड्यूरेशन का मैं तुमको टाइमिंग वाले हेडिंग में बताऊंगा. एंड प्रोग्रेस का छोड़ दो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इटियोलॉजी हाउ योर हेडिंग विल प्रोग्रेस. ऑलराइट. लेट अस कम टू कैरेक्टर सी. ठीक है. We will discuss about character now. Fine. So if the patient tells you कि बहुत headache मतलब दर्द हो रहा है, aching type, ACHING, aching. ठीक है. aching type, ऐसे general blunt pain हो रहा है. ठीक है. You guys will relate to this. So it's tension type of headache. बस ऐसे गंदा सा blunt headache होता है, मतलब it's nothing much. You just feel irritated. ऐसे it's a blunt kind of pain, not that serious but bad enough to ruin your day. ठीक है. So aching type of pain, ACHING, it's seen in tension type of headache. ठीक है. ऑलराइट. अभी माइग्रेन में कैसा पेन मिलता है, राइट दिस डाउन, वेरी कैरेक्टरिस्टिक. इफ द पेशेंट इज वेल एजुकेटेड, वो तुमको दीज टर्म्स स्पेसिफिकली बताएगा. थ्रॉबिंग, पाउंडिंग और पल्सेटिंग. ठीक है. थ्रॉबिंग स्लैश पाउंडिंग स्लैश पल्सेटिंग. फाइन. राइट ऑल दीज थ्री टर्म्स. They might use each one of them separately. ठीक है. थ्रॉबिंग स्लैश पाउंडिंग स्लैश पल्सेटिंग. फाइन. ऑल राइट. उसके बाद या एंड द थर्ड टाइप कैरेक्टर में पिन्स, नीडल्स और स्टैबिंग टाइप. ठीक है. पेशेंट से कि पिन या नीडल जैसे चुभ रहा है. ठीक है. और स्टैबिंग, पिन्स एंड नीडल प्रिकिंग और स्टैबिंग. ठीक है. This is seen in two types, cluster headache as well as trigeminal neuralgia. ठीक है. Trigeminal neuralgia, if you guys know, it's pretty bad condition. मतलब वो trigeminal के 3 branches रहते हैं, ophthalmic, maxillary, mandibular. उसके डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे चुभने वाला सेंसेशन आता है पिन्स नीडल्स का. प्रीटी बैड कंडीशन, गाबापेंटिन देना पड़ता है उसके लिए, हाई डोज, वेरी पेनफुल कंडीशन. ठीक है. सो पिन नीडल टाइप ऑफ पेन और स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन इज सीन इन क्लस्टर हेडेक और ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया. या यू कैन गिव कार्बामेज़ेपिन एज वेल. कार्बामेज़ेपिन पहले देते हैं. आई थिंक इफ इट डजंट इंप्रूव देन यू हैव टू गिव गाबापेंटिन. या दैट्स राइट, कार्बामेज़ेपिन पहले देते हैं. आई फॉरगॉट अबाउट दैट. Guys, just hold on for a minute. Okay, I'm getting some message. I'll be back in a minute.
Yes, I'm back. Anyone has any questions? क्या किसी का छूट गया कुछ लेकिन I'll repeat it. छोटा सा टॉपिक है कि जल्दी खत्म हो जाएगा. If guys miss out on something, just ask. Now I'm reading the channel only. मतलब जो भी messages आ रहे हैं. So it's fine if you guys want to ask anything. All right, ठीक है. SOC हो गया. चलो, we'll come to radiation. Radiation is easy. There's very specific points. What if your headache is radiating to the neck? Anyone has a clue? Type. Headache is radiating to the neck. Yeah, that patient's about to die. He's having meningitis. ठीक है. Any person comes to you and he's saying कि मेरे को headache हो रहा है, but मुझे neck में भी pain हो रहा है. ठीक है. Meningitis. Please refer to the hospital urgently. I mean, he'll come with other obvious signs, of course. उसको intracranial raised ICT के भी signs होंगे. Projectile vomiting and stuff. But you need to be on the lookout. Brain herniation. It's a rare condition. I mean, ठीक है. Brain herniation हुआ तो भाई patient unconscious ही हो जाएगा. Uncle herniation में patient just becomes unconscious. And तुमको pons के compression signs मिलेंगे. So headache is the least of your concerns if you're having brain herniation. Yes, neck pain is different from neck stiffness. Neck stiffness is what you see on examination, and neck pain is what the patient tells you on history. ठीक है. So both will coexist. ठीक है. ये तो मैं history का part समझा रहा हूँ ना, इसलिए I'm saying. ठीक है. Examination में of course you'll find neck stiffness. ठीक है. But what the patient will tell you is he's having pain in his neck. ठीक है. Neck stiffness is what you see, and neck pain is what the patient tells you. ठीक है. And we are discussing history here, so patient तुमको neck pain के बारे में बताएगा. ठीक है. All right. Carotid dissection stroke will have focal neurodefects. हाँ होगा ना carotid dissection. Very random question. Neck pain. ठीक है. I mean, we are not discussing stroke here. Stroke में भी headache होगा, but I mean the patient will not come to you with headache complaints. He'll come to you with paralysis complaints. So, yeah. I'm only discussing the causes where headache is the chief complaint. ठीक है. ये stroke हो, there are thousands of causes of headache, but if the patient comes to you with stroke, the last thing he'll complain about is headache. वो बोलेगा मेरे को paralysis हो गया. ठीक है. Fine. Let us come to radiation. मैंने neck बता दिया तुमको. If the pain is radiating to the neck, it's meningitis. If the headache is radiating to the face, pain is radiating to the face as well. Easy. Trigeminal neuralgia. ठीक है. And if the headache is and if the pain is felt in the eye as well. ठीक है. Pain is felt in the eye as well. ठीक है. It can be glaucoma or due to refractive errors. ठीक है. Glaucoma or refractive errors. ठीक है. Right. Don't confuse this with cluster headache. Cluster headache तो originate ही होता है eye के पीछे. It's specifically localized to the eye. ठीक है. But this headache I'm talking about is this headache what I'm talking about is वो तुमको primary headache है, not in the eyes, but you're feeling it in the eyes as well. Additionally. ठीक है. Alright. So glaucoma में भी तुमको headache मिलेगा, but तुमको eyes में भी feel होगा pain. ठीक है. Alright. और refractive errors as well. ठीक है. Fine. So yeah. So radiation of pain to the neck, meningitis. Radiation of pain to the face, trigeminal neuralgia. And radiation of pain to the eyes, it's glaucoma. Alright. Fine. Now we'll come to the most important part: associated features. SOCRA. Associated features. Alright. Fine. This is your favorite part. ठीक है. If the associated features में stressful lifestyle. ठीक है. Stressful lifestyle. It leads to what types of headaches? Tension type of headache and migraine. ज्यादा टेंशन लेने से टेंशन टाइप ऑफ हेडेक होता है एंड माइग्रेन होता है. ठीक है. ऑलराइट. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्ट्रेस मत लो, माइग्रेन हो जाएगा. फाइन. वेरी कॉमन क्वेश्चन ओपीडी में, लाइक एमडी मेड वाले फर्स्ट थिंग यू आस्क इज टेंशन ले रहे हो क्या आजकल ज्यादा. द पेशेंट से यस, some I don't know, some financial problem, some workplace problem, they immediately start narrowing it down to tension type headache and migraine, right? Fine. What if the headache is associated with vomiting? What if the headache is associated with vomiting? Spyro क्या बोल रहा था? No, just nice. She doesn't give me headaches. It's fine. Yeah, if the
Migraine is associated with vomiting. Very, very bad sign. It's being recorded. अरे just a second यार phone बज रहा है. हाँ fine. What did I say after stressful life? Tension type of headache and migraine. Alright. नहीं यार this phone. Fine. Associated with. हाँ I was talking about vomiting ना. Vomiting a very very bad sign. ठीक है. Requires urgent referral. Vomiting किस में दिखता है? Migraine में vomiting मिलेगा. ठीक है. Raised intracranial tension. Anything. It can be due to anything. And meningitis. ठीक है. Three causes लिख दो. Migraine, raised intracranial tension, that can be due to anything. It can be due to it can be due to a brain tumor, it can be due to pseudotumor cerebri, it can be due to hydrocephalus. जो भी है, I don't know. Raised intracranial tension. Meningitis में खुद raised ICT मिलता है, indirectly. ठीक है. And meningitis. Does anyone know a special feature of meningitis का vomiting? Very basic question. ठीक है. Final year वालों को पता होना चाहिए. Yeah, that's projectile. मतलब यूजुअली व्हेन वी आर वॉमिटिंग हमको वी बेसिकली गिव अ वार्निंग टू पीपल अराउंड अस कि भाई मैं उल्टी करने वाला हूँ हट जाओ. ठीक है. वी बेसिकली कम टू नो कि वी आर अबाउट टू वॉमिट. बट मेनिंजाइटिस में ऐसा नहीं होता है. मेनिंजाइटिस में द पर्सन जस्ट वॉमिट सडनली. देयर इज नो वार्निंग साइंस, देयर इज नो प्रीवियस फीलिंग कि हाँ भाई मुझे वॉमिटिंग होने वाली है. द पर्सन जस्ट वॉमिट्स डायरेक्टली. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. ठीक है. Alright, that is called projectile vomiting. Vomiting without any warning to others or yourself. ठीक है. Alright. What if the headache is associated with visual disturbances? दिखाई देने में problem हो रहा है. Visual disturbances. ठीक है. Let's start writing. One thing it can be is migraine related with a visual aura. ठीक है. First thing that should come to your mind. Because migraine बहुत common है and migraine is often associated with aura. पढ़ा होगा ना माइग्रेन दो टाइप का रहता है, विद ऑरा, विदाउट ऑरा. इफ इट इज विद ऑरा, द ऑरा कैन बी विजुअल इन नेचर. ठीक है. सो ये सबसे पहले डिफरेंशियल रखना बिकॉज इट्स क्वाइट कॉमन माइग्रेन. एंड माइग्रेन कैन बी विद ऑरा और ऑरा कैन बी एनी टाइप. इट कैन बी मतलब टेस्ट का ऑरा आता है, हियरिंग ऑरा आता है, विजुअल ऑरास आते हैं. इफ इट्स विजुअल तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस मिलेगा ऑफ कोर्स. ठीक है. ऑलराइट. फाइन. So visual disturbance में next part of course intracranial space occupying lesion. I don't need to go in ज़्यादा detail about this. Optic now compress हो जाएगा. So yeah, intracranial space occupying lesion. ठीक है. Intracranial space occupying lesion. Also raised intracranial tension. ठीक है. Raised intracranial tension. Does anyone know why raised intracranial tension में? Anyone know the logic? पता होना चाहिए final year वालों को. न्यूरोलॉजी हिस्ट्री टेकिंग. रेज इंट्राक्रेनियल टेंशन में क्यों विजुअल डिस्टर्बेंस मिलेगा? नॉन स्टाइपिंग. नो, नॉट कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व. नो 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 नो. नहीं 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 नहीं. नो. अरे किसी को भी नहीं पता क्या? अरे यार नहीं यार, नहीं नहीं. आई एम सेइंग इन जनरल. Stop typing. Stop typing. See, what is the first nerve to get affected when there's raised intracranial tension? याद करो. भूल गए क्या? नहीं, not 3. अबे abducens nerve. Abducens cranial nerve 6 is the first one to get affected whenever there's raised intracranial tension. ठीक है. और उसके वजह से डिप्लोपिया हो जाता है. ठीक है. Did you guys forget? Abducens nerve is the first one to get affected whenever there's raised intracranial tension. ठीक है. And if the abducens nerve gets affected, lateral deviation of eyes gets affected. एक साइड का. It can be bilateral only. It can be bilateral also, but पहले unilaterally start होता है. So उसके वजह से eyes are not able to move laterally and lateral gaze में diplopia हो जाता है. And the person complains to you about diplopia. ठीक है. अरे ये basic fact है. You guys should know this. Raised intracranial tension में इसके लिए it is called false localizing sign. Have you guys heard this? Go on Google right now. False localizing sign.
ठीक है. रेज इंट्राक्रेनियल टेंशन में one of the first signs is visual disturbances. Person complains कि मेरे को double double दिख रहा है. That is because the first nerve to get affected is the abducens nerve. Because abducens nerve का बहुत लंबा कोर्स होता है, वो पीछे से जाके वापस it comes all the way in front. ठीक है. So there's a lot of places it can get compressed because है ना, abducens nerve पीछे से, I think I'm speaking correctly. Abducens nerve पीछे से आता है and then it goes all the way in front. ठीक है ना. नहीं, veins Kernohan's knot sign is something different. वो इंट्राक्रेनियल ब्लीड में मिलता है. आई थिंक दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट. दैट इज वो अलग ही है. लेट्स नॉट डिस्कस दैट नाउ. दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. वो हेड इंजरी में रहता है, वो ट्रॉमा का थिंग है. हर्निएशन ऑफ ब्रेन, यस. कर्नोहन्स इज डिफरेंट. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, जब भी, हाँ, दैट इज आल्सो फॉल्स लोकलाइजेशन, या बट दैट इज समथिंग डिफरेंट. हाँ, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, जब भी एक पर्सन को raised intracranial tension रहेगा, the first cranial nerve to get affected is the abducens nerve and the patient will complain about diplopia. ठीक है. All right. Basic facts, please don't forget this. This is, ये वाइवा में छूट गया तो teacher will think you are dumb. ठीक है. Don't do this. याद करना. ठीक है. All right. Visual abducens palsy ICP most common cause. Yes. The most common cause of sixth nerve palsy is raised intracranial tension. ठीक है ना. Alright, I won't spend much time on this, बहुत लंबा जा रहा है. So visual disturbances में मैंने बोला migraine related with aura, intracranial space occupying lesion, compressing on optic nerve, optic sheath or whatever, and then raised ICT causing abducens nerve का बकचोदी. ठीक है. उसके बाद में visual disturbances में temporal arteritis. ठीक है. I'll tell you more features about temporal arteritis later. ठीक है. And finally glaucoma. ठीक है. टेम्पोरल आर्टराइटिस, ठीक है, एंड ग्लोकोमा. दीज आर वेरी रेयर कॉजेस, बट बाकी सब एलिमिनेट करने के बाद गो टू टेम्पोरल आर्टराइटिस. टेम्पोरल आर्टराइटिस में जॉ क्लॉडिकेशन भी मिलेगा. आई विल डिस्क्राइब दैट लेटर, डोंट वरी अबाउट इट. सो टेम्पोरल आर्टराइटिस इज क्वाइट ऑब्वियस, जॉ क्लॉडिकेशन मिलता है. एंड ग्लोकोमा इज आल्सो क्वाइट ऑब्वियस. आई थिंक पेशेंट प्रॉपर विजुअल हिस्ट्री के साथ आएगा. Plus patient will have some other comorbidities and stuff. So it's easy to diagnose. ठीक है. So don't worry about this. सबसे पहले your duty is to eliminate migraine and to do a CT scan or an MRI to eliminate any intracranial space occupying lesion or any intracranial bleed or anything that causes raised ICT. ठीक है. That's your first responsibility as primary healthcare providers. ठीक है. उसके बाद become over smart and think about temporal arteritis and glaucoma जैसे causes. ठीक है. Because they are not medical emergencies. ठीक है. सबसे पहले पेशेंट को सीटी करने भेजो. ठीक है. यू हैव टू एलिमिनेट एनीथिंग इनसाइड द क्रेनियम. ऑलराइट. विजुअल डिस्टर्बेंसेस. ऑलराइट. व्हाट इफ द पर्सन's headache is associated with lacrimation, rhinorrhea and facial flushing. ठीक है. Yeah, Rapunzel's right. Lacrimation, rhinorrhea and facial flushing. नाक से पानी, आंखों में से पानी और चेहरा लाल लाल. ठीक है. क्लस्टर हेडेक. हाँ, कॉफी. रिफ्रैक्टिव एरर्स ओनली. मतलब मैं जब भी ग्लोकोमा बोलता हूँ ना, सो ऐसे स्लैश रिफ्रैक्टिव एरर्स भी लिख दो. आई एम बेसिकली रेफरिंग टू आई कंडीशन. या यू विल कंसिडर रिफ्रैक्टिव एरर्स थोड़ा अर्ली. या वैसे मैंने मतलब इट्स एन अंडरस्टूड थिंग, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, बट या यू कैन राइट इट डाउन. Whenever I mention glaucoma, refractive errors लिख दो. मतलब just keep it in mind. ठीक है. So what was I saying? Cluster type headache. Yeah, I'm referring to lacrimation, rhinorrhea and facial flushing. ठीक है. Cluster type headache में आता है. Person will cry. Person के नाक से पानी आएगा. Person will be all with a snuffy nose and person का face will be all लाल लाल. ठीक है. Facial flushing की वजह से. This cluster type of headache. ठीक है. Alright. What if the headache is associated with photophobia? Person is hiding away from light. ठीक है. Person is sleeping prone. ठीक है. बंदा is like मेरे को ट्यूबलाइट देखना ही नहीं है. ठीक है. मेरे को हेडेक हो रहा है if I see light. ठीक है ना. meningitis dangerous. You need to refer the patient urgently. ठीक है. meningitis migraine में मिलता है, but I'd suggest you guys don't write it down because a very small cases of migraine में photophobia मिलता है. Plus you have more than enough history to ask for migraine.
So photophobia is an unreliable thing. Don't matlab, if you guys want to write it you can, but I'd prefer don't write photophobia. Meningitis लिख दो, dangerous condition. Yep. So where was I? Yeah, photophobia. Person hiding from light, meningitis. Guys, am I audible? अरे मैंने mic mute कर दिया था for 10 seconds. Yeah. हाँ, तो मैं photophobia की बात कर रहा हूँ. Person is characteristically person is having headache. Person lies prone and उसको light देखना ही नहीं, and he gets very irritated during the night because उन tube lights on कर, ठीक है? Photophobia, bad sign. Just refer the patient urgently to a hospital, ठीक है? Meningitis, alright? Fine. Neck stiffness मैंने mention कर दिया. What if the headache is associated with neck stiffness and neck pain? Again meningitis. लिख दो, ठीक है? These are all things you have to ask, ठीक है? Headache में. Alright? Neck stiffness, meningitis. Again, ठीक है? What if the headache is associated with the fever? Again meningitis. ठीक है? ठीक है? Neck stiffness अलग से लिखो, meningitis, fever अलग से लिखो, ठीक है? Headache associated with fever, meningitis. Alright? Alright. Another nice question. Anyone who answers this gets my internship का money, ठीक है? What if the headache is associated with a purpural rash on the skin? Answer. What if the headache is associated with a purpural rash? ठीक है? Kawasaki is a good answer, but there's something more important before that. Yes, chalo. Bats gets my internship money. Yes, meningococcal meningitis. Meningococcal meningitis. Yes, Neisseria. ठीक है? Kawasaki is also a good answer, but I don't think Kawasaki में characteristically headache मिलता है, if I remember correctly. I might be wrong. Kawasaki में rash मिलेगा, yes, but I don't think headache is a chief complaint in Kawasaki. ठीक है? Whereas this meningitis which I'm talking about, उसमें headache रहेगा as a chief complaint. Plus you'll see fine pink spots on the skin of the person. Basically बंदे को coagulopathy हो रहा है due to Neisseria meningitis का infection. ठीक है? Alright? Fine. All right. So I'm basically referring to meningococcal sepsis. ठीक है? I'm referring to meningococcal sepsis secondary to meningococcal meningitis. ठीक है? That's purpural rash on the skin. ठीक है? All right. What if the headache is associated with recent weight loss? ठीक है? Headache is associated with recent weight loss. हाँ, standard question which you ask for cancer. ठीक है? Standard. TB की वजह से headache, TB meningitis की वजह से headache, not such a prominent feature, but ठीक है, good question. Tuberculoma हो सकता है. Fine, I'll write it down. मतलब मैंने यहाँ mention नहीं किया, but that's nice. So basically, when I'm referring to weight loss, it's a malignancy. It can be a primary malignancy or cerebral metastasis हो गया, or it can be tuberculoma or TB meningitis. TB meningitis मत लिखो, rather write down a tuberculoma. ठीक है? Because it is a space occupying lesion as well. ठीक है? Alright, so weight loss, malignancy can be primary or secondary, or TB की वजह से tuberculoma. ठीक है? These are good differentials for weight loss. And weight loss significant होना चाहिए. Does anyone know definition of significant weight loss? हम weight loss करते रहते हैं, but you guys should know the definition. Definition, yeah, 10% in the last 3 months is the definition for significant weight loss. ठीक है? So if my weight is मेरा weight 3 months back was 70 kg and now I'm 63 kgs. I lost 7 kgs over the last 3 months. That is significant weight loss. ठीक है? Alright? चलो. What if your headache is associated with temporal tenderness? I've given away the answer. Very characteristic feature. Temporal tenderness, myalgia and arthralgia. Yes, giant cell arteritis. ठीक है? एकदम typical trial. ठीक है? If you guys miss this, there's something wrong with your MBBS education. ठीक है? मत करो ऐसे obvious signs miss.
पर्सन प्रॉपर तुमको टेम्पल के पास फिंगर रख के बोलेगा मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, मेरे को मसल्स में पेन हो रहा है और मेरे को जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ऑन द स्पॉट डायग्नोसिस जॉइंट सेल आर्टराइटिस, ठीक है, डोंट मिस इट. GCA is very rare bats, मतलब हाँ it's very rare but it's one of those things where if it comes now you should diagnose it on the spot, ठीक है. या polymyalgia rheumatica वही बोलते हैं उसको, या मसल पेन जॉइंट पेन, ठीक है. या you'll get sued if you don't diagnose it in USA or something, ठीक है. It's a on the spot diagnosis, मतलब of course you'll do investigations and stuff but उसका clinical diagnosis is very on the spot types, ठीक है. So temporal tenderness associated with myalgia and arthralgia, ठीक है. हाँ उसका बायोप्सी करते हैं, आई थिंक बायोप्सी या बायोप्सी ऑफ द आर्टरी, तो उसमें ग्रैन्युलोमास दिखेंगे. जैसा क्राइटेरिया सी रिएक्टिव प्रोटीन मेजर करते हैं, ESR मेजर करते हैं, एंड यू टेक अ बायोप्सी वहां से, तो ग्रैन्युलोमा दिखता है वहां पे. एंड यू स्टार्ट स्टेरॉइड्स इवन बिफोर ट्रीटमेंट, आई थिंक या स्टेरॉइड्स स्टार्ट हो जाता है बिफोर ट्रीटमेंट. एंड या एशियन पॉपुलेशन दिस फैक्ट आई डोंट नो बट होगा मे बी, ठीक है. फाइन फाइन, वी आर नॉट डिस्कसिंग जीसीए का थियरी, लेट्स मूव ऑन, ठीक है. टेम्पोरल टेंडरनेस, myalgia, arthralgia, giant cell arteritis, ठीक है. Alright, another very easy thing. What if the headache is associated with facial tics, TICS? I think you guys know what tics are. Involuntary movement type होता है चेहरे का, ठीक है. Facial tics, trigeminal neuralgia, ठीक है. Trigeminal neuralgia, very easy, nothing, on the spot diagnosis. Patient is making funny faces at you, OPD में तुम पे wink कर रहा है, ठीक है. And if you're a female doctor, you might as well think that person is trying to flirt with you, but no. If the person is having a headache and he is presenting with weird facial expressions, don't think about kicking the patient out. Mamas को बुला के think about trigeminal neuralgia first, ठीक है. Yeah, pain lasts very less. हाँ, Vince. Trigeminal neuralgia का pain lasts short. I'm not sure about 1 minute का duration, but आता है जाता है, आता है जाता है. It's called tic douloureux. Yeah, it's called tic douloureux. Yep. Yeah. Trigeminal neuralgia में pain lasts short. That's all I've read. I don't know what exactly the duration for shortness is, but ठीक है. If you're saying 1 minute, maybe it's right. Check कर लेना बाद में. Alright. अरे ट्राइजेमिनल न्यूरल जस्ट प्रेसिपिटेटेड बाय वैरायटी ऑफ थिंग्स. खाना खाने से प्रेसिपिटेट होता है, ठंडा हवा मारा तो, इफ यू ब्लो पफ ऑफ एयर ऑन समन्स फेस, उसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो जाता है. बहुत बकचोदी है, टच किया तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, सडनली लाइट फ्लैश किया तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, if you eat something spicy precipitate हो जाता है. So a lot of stupidity उसमें, so forget about it उसका. Oh fine, we are done with associated symptoms as well. We are done with SOCRA. Let us come to T. ठीक है. So based on how long your headache lasts, we get a clue regarding क्या type of headache it is. ठीक है. Alright. Oh हाँ guys, I forgot this. Very important, very important. ठीक है. What types of headaches awaken you during the night? ठीक है. Associated symptoms में लिख दो. ठीक है. Headaches that make you wake up during the night. Anyone has a clue? Which ones? Headaches जिसके वजह से the person wakes up during the night. Nocturnal headache. Yeah. 3 causes. Migraine, cluster headache and intracranial space occupying lesion. ठीक है. Very important, very important, very important. ठीक है. If the person tells you कि he wakes up during the night due to the headache, ठीक है, it can be either good news or it can be very bad news. Good news being it can be either migraine or cluster headache, which is not a medical emergency. ठीक है. And the bad news being it can be an intracranial space occupying lesion. ठीक है, बेटा सीटी के लिए भेजना पड़ेगा. ठीक है. So this is something scary. If this annoying auntie comes to you and tells you मेरे को headache का जैसे रात को नींद नहीं आ रही है, आंटी को सीटी का प्रिस्क्रिप्शन लेकर भेज दो. ठीक है. You need to eliminate intracranial space occupying lesion first. All right. Fine. ठीक है. Now we'll come to timing. You guys want a break क्या? I'll give you a minute or two just to catch up on जो भी मैंने लिखा है. Even I'll go have a glass of water. Come back in a minute. ठीक है. I'll be back.
Yeah, guys, I'll continue. Timing yeah, ठीक है, fine. All right. Timing के लिए what if a headache lasts less than 4 hours? ठीक है, मतलब this person comes to you with a headache. तुमने सब danger signs eliminate कर लिए. So you know it's the plain variety, classic variety of headache. Classic variety of headache मतलब it's either migraine, it's either tension type, or it's cluster type of headache. ठीक है. And then this person is like, my headaches last for less than 4 hours. ठीक है. What can it be? Cluster type of headache. ठीक है. Person comes with headache, तुमने सब red flags eliminate कर दिया, and then you come to know that the headache lasts for less than 4 hours. Of course, you will get other signs as well. The headache is localized behind the eyes and stuff. ठीक है. So that is cluster type of headache. It doesn't last for very long. ठीक है. Cluster headaches. ठीक है. On the other hand, you have person comes to you with headache. You have eliminated all the red. You have eliminated all the red signs, not red signs, red flags. ठीक है. And then the person tells you कि my headaches last for more than 4 hours. ठीक है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी माइग्रेन और इट कैन बी टेंशन टाइप ऑफ हेडेक. ठीक है, वो हिस्ट्री पे तुम डिफरेंशिएट कर लोगे माइग्रेन का ऑरा वोरा, पल्सेटिंग थ्रॉबिंग नेचर, टेंशन टाइप ऑफ हेडेक का ब्लंट नेचर. ठीक है, वो तो तुम कर लोगे, बट इट कैन ईदर बी माइग्रेन और टेंशन टाइप ऑफ हेडेक. ठीक है, फाइन. एक्सपीरियंस किया होगा ना पढ़ाई का टेंशन, हेडेक थोड़ी ना लास्ट फॉर लेस देन 4 hours. आधे दिन में आधा दिन चला जाता है हेडेक में, दैट्स मोर देन 4 hours. ठीक है, पढ़ाई नहीं करते हम, अरे तो पढ़ाई नहीं करने से भी तो टेंशन आती है ना. तो दैट हेडेक लास्टेड फॉर मोर देन 4 hours आई थिंक, है ना. यूजुअली लास्ट फॉर मोर देन 4 hours. ऑलराइट, फाइन. सो yeah, headache lasting, classical headache lasting for less than 4 hours is cluster, and classical headache lasting for more than 4 hours can be either migraine or tension type headache. Right, with this we are done with Socrates का SOCRAT. ठीक है, now we'll move on to exacerbating and relieving factors. चलो, ठीक है, we'll move on to exacerbating and relieving factors. ठीक है, fine. All right, now there's one very ironic point here. ठीक है, headache which is relieved on sleeping. ठीक है, migraine is characteristically relieved on sleeping, but I just now told you कि headache that awakens you during the night, ठीक है, that can also be migraine. So don't confuse between these two things. What I'm trying to say is अगर तुमको migraine रात को आया तो तुम उठोगे, of course you'll wake up, पेन इतना ज्यादा होता है. But what I'm trying to say here is, suppose your migraine starts at around 8 p.m., 9 p.m., around dinner time. ठीक है, and then the peak of migraine has passed away. ठीक है, माइग्रेन का पीक चला गया, अभी रेसिडुअल पेन बाकी है. ठीक है, बट इफ यू स्लीप दैट पेन विल रिड्यूस. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. ठीक है, सो हेडेक व्हिच इज रिलीव्ड ऑन स्लीपिंग, आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट माइग्रेन. ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट. ठीक है, what I'm trying to say is, if you get a migraine during the night only, 2 a.m., 3 a.m. something, you'll wake up. Of course, you'll wake up. ठीक है, but if you get a migraine just before like around dinner time, ठीक है, and then you are trying to sleep after the peak of the migraine has passed away, उसके वजह से पेन कम होता है, so that's a clue of migraine. ठीक है, fine. I don't think anyone will get confused at this point. ठीक है, and then now there's this very important point. ठीक है, postural variation of headache. ठीक है, postural variation of headache. ठीक है, postural variation of headache, especially which improves on lying down. ठीक है, headache which shows postural variation which improves on lying down. आंटी ने ये पॉइंट बोला. ठीक है, drop everything, drop the food that you're eating, put her in a rickshaw and take her to the nearest CT scan का center. ठीक है, raised intracranial tension. ठीक है, very very bad sign headache में. हेडेक में postural variation मिला, yeah, it's really bad. Poor auntie is going to die. ठीक है, if you don't take any intervention. अंकल herniation और सब हो जाए. ठीक है, immediately CT scan या MRI चाहिए. ठीक है, fine. All right, postural variation, never forget to ask this. ठीक है, I've told you so many points, but कभी भी headache का postural variation पूछने को मत भूलना. ठीक है, you will basically eliminate intracranial tension at once. ठीक है, fine. All right, and Socrates का last point is severity. So that is just a formality question. Doesn't matter. Just ask the patient on a scale of 1 to 10 how severe your headache is. That is just for prognosis and
dosage of medication के लिए. If it's more severe, you'll give a higher dose of carbamazepine or gabapentin or some painkiller. I don't know. हाँ, postural variation है बस, intracranial tension. और कोई headache postural variation नहीं बताता. In I'm 99% sure दूसरे headaches postural variation नहीं बताते. If your headache is showing postural variation, भैया CT scan center लेके जाओ, ठीक है? Intracranial tension, ठीक है? Yeah. Sinusitis. Sinusitis का postural variation I'm not sure. I'll have to check up on this. बढ़िया है अगर sinusitis में headache मिलेगा, but sinusitis is a very harmless condition and it resolves on its own. इसलिए I haven't mentioned sinusitis anyway. But yeah, I'll check up on sinusitis and let you guys know. ठीक है? Raised parts meningitis comes ना under intracranial tension indirectly. ठीक है? Meningitis comes under the wide umbrella of raised intracranial tension. So समझ जा, ठीक है? And sinusitis increases on bending forward. This I don't know. ये मुझे पता नहीं. Fine, if you guys want to write it down, you can write it down. मुझे भी नहीं पता था. Sinusitis increases on bending forward. Fine. If you're sure about it, लिख दो. I'll check it up and write it in clinical discussions का page बाद. I'll see. Fine. All right. But don't forget about raised intracranial tension and meningitis. So comes under that only. Okay. So when I say raised ICT, I'm referring to all conditions. I'm talking about brain tumors. I'm talking about hydrocephalus. I'm talking about tuberculomas. I'm talking about intracranial bleeds. I'm talking about meningitis. Okay. All right. Fine. With this we are done with Socrates. But मैं end में तुमको सब red flags summarize करूँगा. ठीक है? In case you guys don't remember everything what all to ask. ठीक है? So फटाफट से I summarize all the red flags of headache which you have to ask in a patient. ठीक है? Fine. So there are 7 red flags of headaches. ठीक है? सबसे पहले लिख दो headache of very sudden onset reaching peak intensity within 5 minutes and patient describes it as being the worst headache of their life. ठीक है? You guys know what to write. I'm talking about subarachnoid hemorrhage. ठीक है? Headache of very sudden onset reaching peak intensity within 5 minutes and person describes it as being the worst headache of their life. ठीक है? I'm referring to subarachnoid hemorrhage here. ठीक है? I'm referring to subarachnoid hemorrhage. Fine. Second red flag. ठीक है? Person's headache presents to you with fever, neck rigidity, projectile vomiting, and an altered mental status. Meningitis. I'll repeat myself. Headache which presents with a fever, neck rigidity or neck pain, projectile vomiting, and an altered mental status. Plus minus altered mental status. Not necessary. हर बार होना चाहिए. ठीक है? Meningitis, medical emergency. ठीक है? Fine. No, sorry. There's only 6 red flags. ठीक है? ये छोड़ दो. All right. History of any head trauma in the last 3 months. Ask for the person. भाई सर्वर पे लगा है क्या last 3 महीने? Intracranial bleeding. ठीक है? It can be anything. Subarachnoid, subdural, extradural. कुछ भी हो सकता है. I don't care. But always ask a person for history of head trauma in the last 3 months. ठीक है? Last 3 months. Fine. Fourth red flag. Headache which changes with posture. Raised intracranial tension. All right. Headache which changes with posture. Raised intracranial tension. Fine. Next thing. Headache which presents with temporal tenderness and jaw claudication. ठीक है? Headache which is associated with temporal tenderness and claudication of jaw. ठीक है? jaw मूव करने पे पेन होता है. ठीक है? temporal arthritis. ठीक है? या claudication. CLUD. हाँ स्पेलिंग सही है. temporal jaw claudication and temporal tenderness. It's temporal arthritis. ठीक है? temporal arthritis, giant cell arthritis. ठीक है? Same thing. Temporal arthritis is just another name for giant cell arthritis. ठीक है? Fine. All right. And last red flag. ठीक है? Very characteristic. Headache which is associated with eye pain, blurred vision, redness of the eye, and nausea, vomiting.
ठीक है, ऑलराइट. हेडेक व्हिच प्रेजेंट्स टू यू विद पेन इन द आईज. हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी. हेडेक व्हिच प्रेजेंट्स टू यू विद पेन इन द आईज, redness in the eyes, blurred vision, and nausea, vomiting. Glaucoma, what else? ठीक है, simple. This is how you eliminate glaucoma. Very simple history. 4 points. आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है, आपको आंखों में दर्द हो रहा है, ठीक है, आंख लाल हुए क्या आपको, या आपके रिलेटिव्स ने बोला आपकी आंखें लाल हुए और आपको उल्टी हो रही है क्या, ग्लोकोमा. ऑलराइट. अरे क्या जिया तुम. फाइन फाइन. ठीक है, सो all right. With this, we are done with headache, I think. Yeah, I'm pretty sure if you guys read this once or twice, any person comes to you with headache का complaint, at least you'll be able to eliminate ऐसे गंदे varieties of headaches. ठीक है? And once you eliminate all the red flags of headaches, all the danger varieties, you know that कि तुम्हारा headache is either migraine, it's either cluster type of headache, or it is tension type of headache. The three of them are not medical emergencies, तो तुम बाद में देख लो. जैसे as you want to proceed, just find out what type of headache. So, but whenever a person comes to you with headache, your first priority is to rule out all the dangerous causes, like raised ICT, meningitis, or this temporal arteritis, glaucoma and stuff. ठीक है? So fine. Yeah, yeah. इतना ही है headache में. This is all I've written as well. I think this is more than enough, and you guys will get a good grip on how to ask questions if anyone is asking headache के बारे में. All right? चलो bye. Anyone have any doubts? Chat box में पूछ लो. Not chat box, channel में पूछ लो. And yeah, चलो I'll cut the call. चलो, good night, take care.